The third question is very simple. हमको बस इंटरेस्ट से एक कंपनी को कितना इनकम मिल रहा है ये कैलकुलेट करना है. द प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ फाइनेंस कंपनी. इफ आई एम अ कंपनी एंड आई एम गिविंग लोन्स टू मेनी पीपल, how much am I generating income with the interest amount? ठीक है, I'm going to calculate this only in this problem. I'll read the question. A finance company has advanced loans to 6 clients whose critical details are given in the following format, which is this, which is in your sheet, right? All the loans are repayable in equated quarterly installments. तो हमारी periodicity जो है वो quarterly है, right? Quarterly means how many payments in a year? 4 payments in a year. You are required to compute the projected interest income of finance company for the next 10 quarters. अगले 10 quarters के लिए कितना income इस company को मिलेगा ये calculate करना है. So whenever we have to calculate interest for a particular installment, it means we should use IPMT function, right? So when you open the arguments for IPMT, what is it asking? Rate दिया है, divided by periodicity, right? Per means your installment number. कौन सी installment के लिए चाहिए? मेरे को first quarter के लिए चाहिए, first installment के लिए चाहिए. NPER is simply period multiplied by periodicity. ये periodicity fixed रहेगा पूरा का पूरा, right? Present value is minus of this, right? I got my IPMT for the first installment. यूजुअली क्या करते हैं, अगर एक का पता चल गया तो हम ड्रैग करते हैं, राइट? अगर राइट हैंड साइड ड्रैग कर रहे हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल R करते हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं तो सिलेक्ट करके कंट्रोल D करते हैं. बट उससे पहले वी हैव टू डू सम रेफरेंसिंग, ठीक है? कुछ रेफरेंसेस फिक्स करना पड़ता है, कुछ रेफरेंसेस ऐसे ही हम डाल देंगे. अब ध्यान से देखो, रेफरेंसिंग का यहाँ पे सारे सेल्स एक साथ रेफरेंस नहीं होती, ठीक है? बिकॉज वी आर गोइंग टू मूव इट राइट एंड डाउनवर्ड्स. व्हेन यू आर गोइंग टू डू दैट साइमल्टेनियसली वी हैव टू फिक्स पर्टिकुलर थिंग्स. फॉर एग्जांपल ये जो रेट है, ठीक है? नाउ जैसे सेल्स मूव दिस साइड, राइट, I want my rate to move downwards, right? If I'm going to the second cell, my rate का value should be the same. If it comes downwards, it should be 11. यही चाहिए मेरे को. तो मतलब मैं ये वाली जो कॉलम है, कॉलम तो मैं मूव नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रो मूव कर रही हूँ, right? So I will fix only the column which is my D. ठीक है, तो I'm using shift and number 4. So I'm inserting a dollar symbol over here, ठीक है? So my column will be fixed. My rate will move from 10 to 11 to 10 to 11 simultaneously once I move the formula downwards, right? Next, divide by E13. This E13 is my periodicity. ये तो मैं पूरा fix कर सकती हूँ because my periodicity is fixed for the entire problem, right? Next is my installment number F3. F3 is 1. तो next मेरे को G में जाना है, next मेरे को H में जाना है. तो मतलब clearly my columns are moving but my row is not moving. So I will fix the row, right? Third row को fix करके columns move हो रहा है. Next is NPER. इसमें period move होगा. अब यहाँ पे देखो the column will be the same but my values will change once you move downward. So I will fix the column and I will make the rows moving. ठीक है, periodicity मैंने fix कर दिया. Similarly for my PV also, my column will be fixed and my rows will keep moving. If I just drag this, you can see the difference. Got my output, right? Now let me move it right side. Control R. I got the output. You know? Very simple. Let's see once again how we did the fixing. I'll do this once again. See, equal to IPMT.
मेरी रेट ये है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, आई वॉन्ट द कॉलम टू बी फिक्स्ड, ओनली द रोज टू बी मूविंग। कॉलम मीन्स वर्टिकल, रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, नेक्स्ट वैल्यू D6 होना चाहिए ना, तो इसीलिए मैं D को फिक्स करूँगी और 5 को अनफिक्स्ड छोड़ दूँगी, ठीक है। आई हैव टू डिवाइड दिस बाय पीरियोडिसिटी। अब ये सेल तो फिक्स्ड है पूरा, तो आई एम फिक्सिंग इट completely using F4. Installment number is this, right? But again, I want the column to be moving and the row to be fixed. So I will go here and put a dollar sign here. Okay, comma, NPR is the period. Again, इसमें I want this column to be fixed, the rows to be moving. The column को fix किया, rows को moving रखा, multiplied by this, which is completely fixed. My present value is minus this. Again, I want the column to be fixed, so I put a dollar here and the rows will be moving. I got my output. Now I can drag this anyway, I will still get the output. Now I can find out the total for each quarter. The total for each quarter equal to sum of all of these things, control R, ठीक है। मतलब 6 लोगों का इंटरेस्ट मिला के कंपनी की एक क्वार्टर में इतना टोटल मिल रहा है, राइट। सो 10 क्वार्टर्स की टोटल हमने फाइंड आउट किया एंड दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें बस एक ट्रिक है ऑफ रेफरेंसिंग। इफ यू नो रेफरेंसिंग वेरी वेल यू कैन डू दिस, अदरवाइज एक एक करके टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। The fourth question is very similar to the second one. इसमें बस ये है कि we are creating even repayment schedule for floating rate of interest. Floating rate of interest मतलब हर इंस्टॉलमेंट की या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होगा. If you see it is 10, 11, 10.5, 12 and so on, right? So for this, how do we start? The amount of loan is given, a period is given, periodicity is quarterly. We go to data validation. We are making a generalized loan sheet. So I'm allowing a list. My source will be this. And I'm saying okay. To find out the value of the periodicity, I use a VLOOKUP function. I have to look up for this value. Where do I look up for? I should look up over here, second column, and I want an exact match, right? The next thing I do is calculate the number of installments, period multiplied by periodicity, 20 installments, right? My first installment I can enter as 1. The second installment equal to, if my previous installment is less than total installments, and I will fix this, then what we do? Previous installment plus 1, the next installment पे job, otherwise stay straight there, right? So I drag this down till 20. The extra 2 cells are empty because 21 is less than 20. Opening balance. My opening balance is this, right? What is my interest now? If count of my installment is equal to 1, अगर ये numeric value है तो क्या करना चाहिए? Opening balance multiplied by my rate, which is here, divided by periodicity, and I will fix this periodicity, right?
what if my value is false? If my count is not a numeric value, then space छोड़ दो, right? Let's calculate installment. अब installment calculate करना यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, different है, ठीक है? How we are going to do it? First, if count the cell is equal to 1, ठीक है? यहाँ तक तो सेम है. Payment function run करेंगे. My rate is this divided by periodicity. I will fix it. NPER calculation में there is a change here, ठीक है? What do we usually do? Period. I fix it multiplied by periodicity. Fix this, ठीक है? We're going to do one more additional thing. Minus the current installment plus 1, ठीक है? We simply do this to find out कितने installments अब रह गए हैं, ठीक है? Comma माइनस यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट ऑफ लोन नहीं होगा, यह ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है? एंड देन क्लोज वैल्यू इफ फॉल्स स्पेस, राइट? आई डू इट वंस अगेन. इक्वल टू इफ count of my this cell is equal to 1, then the function is PMT. My rate is this divided by periodicity, which I will fix. NPR calculation में period multiplied by periodicity minus current installment, कोई installment में मतलब जिस installment में हुआ plus 1, ठीक है? comma minus opening balance, right? Close value if false space, ठीक है? What is my closing balance? If count this cell is equal to 1, then open parenthesis opening balance plus interest minus installment value if false space, ठीक है? I drag this down. I drag this down to drag my interest my opening balance for the second installment is closing balance of first. If function लगाओगे आगे तो if count of this cell is equal to 1, then it is E8, otherwise space. Drag it down, right? My indicator over here is 0, which means my solution is right and my loan is wound up, right? That's it with question 4. इसमें बस एक चीज़ डिफरेंट किया था हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन में. NPR में what did we do? Period multiplied by periodicity minus current installment number plus 1 and PV की जगह हमने opening balance डाला है, right? That's it.